हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मैंने समस्त को सरस्वती दिवस स्वागत। आज आम टेस्ट सीरीज 2 स्टार्ट करवा। एथिरे भी 50टा क्वेश्चन कवर करवा। पुणी आर सेकंड पार्ट आउ 50टा क्वेश्चन कवर करवा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ, आउ गोटे कथा कहबी, आमर जेते भी क्वेश्चन सब रहइबो आमर सब बेसिक ऊपर रहइबो, कारण आमर एसएसबी बेसिक पूरा बेसिक लेवल बेसिक क्वेश्चन पकैता आउ एडवांस लेवल, कारण बेसिक लेवलटा ही आम करि परियानी। दरकार पड़े एडवांस लेवलटा कोनोसी पिला कर दे परिबो, किंतु पूरा बेसिक रु बेसिक लेवल रे आम करि पारंतिने, से कारण जानिथिने भी करि हबनी। से टाइप रो क्वेश्चन से पकाउछि, बेसी पकाउछंती। तेणु करी आम आज आज ये सब जते भी क्वेश्चन रहइबो प्राय सब आमर बेसिक लेवल सब क्वेश्चन रहइबो। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप रो प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट कौन कोडा करता है? टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स, टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टू सैटिस्फाई क्रेडिटर्स, टू डिटरमाइन द एम्प्लॉइज सैलरी। देखो ये सब जगह तो ठीक अच्छी, किंतु एक्चुअल को कौन पे से करता है? निजर बेनिफिट पे करता है। टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ता माने आंसर हम बी, एक नंबर बी हम आंसर। ओके, कौन हम आंसर हम बी। तेणुक नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट एंड ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट कोटा? जर्नल एंट्री, कैश फ्लो, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड ट्रायल बैलेंस। ये तीन टाइम तो नुह, तार सी हम आमर आंसर। ओके, कौन हम आमर आंसर हम सी। ओके, द नेक्स्ट देखो, इन द फाइनल अकाउंट्स व्हेयर डज द नेट प्रॉफिट गोज। इन द फाइनल अकाउंट माने फाइनल अकाउंट रो कार सोल प्रोप्राइटरशिप रो किंबा जार फाइनल अकाउंट व्हेयर डज द नेट प्रॉफिट गोज। नेट प्रॉफिट हमर कोठी की जो बैलेंस शीट जीवो, कैपिटल अकाउंट जीवो ना ट्रायल बैलेंस ना कैश फ्लो कर जीवो? हमरो जीवो कोटा कैपिटल अकाउंट को जीवो। कैपिटल माने इक्विटी होल्डर मानकर अकाउंट को हमर कोन जीवो? फाइनल अकाउंट रो नेट प्रॉफिट ता जीवो। नेक्स्ट 4 नंबर, व्हिच अकाउंट रिफ्लेक्ट द ओनर्स इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। कोथा रहबो? व्हिच अकाउंट रिफ्लेक्ट द ओनर्स इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल। ओनर्स इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल्स कोठी शो करे? जोटा कि हमारा कैपिटल अकाउंट रे शो करता है। ओके, कैपिटल अकाउंट रे शो करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट रे ट्रेडिंग अकाउंट कौन पे करा जाए? टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, टू रिकॉर्ड विड्रॉल्स, टू डिटरमाइन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कौन करे? ट्रेडिंग अकाउंट कौन पे करा जाए? टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फाइनल पोजीशन ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। ये कौन कहला? सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट कहला, फाइनल पोजीशन कहला, फाइनेंशियल पोजीशन कथा पचार कोटी पचार आठ स्पेसिफिक पॉइंट कथा पचारला, तामाने हमर आंसर हबो बैलेंस शीट हबो हमर आंसर। नेक्स्ट देखो, what is the final step in the preparation of a final account of a sole proprietorship? Preparing the trading account, closing the books of account, calculating gross profit, recording transactions in the journal. Answer of answer of closing the accounts of closing the books of account, closing the books of account. Okay, prepare final account काम कौन? हम वर्ष एंड रे हमर जति की सब अकाउंट सब ओपन ही अछि ता कोन करबा? सब क्लोज कर दवा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द which account is used to record the expenses incurred during the accounting period in the final account? Which account is used to record the expenses incurred during the accounting period final account? कौन आंसर? कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। आंसर हम आमर रेवेन्यू अकाउंट। ओके, रेवेन्यू अकाउंट आमर कौन आसता है? प्रॉफिट जहाँ हम करते जहाँ एक्सपेंसेस इनकम करते तो रेवेन्यू अकाउंट को आसता है। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट ड्यूरिंग द कोट आसता है, रेवेन्यू अकाउंट को आसता है। नेक्स्ट देखिए, which is the amalgamation in corporate accounting. Sorry, what is the amalgamation in the corporate accounting? Dissolution of a company, merger of a two company, sale of a company, company asset, liquidation of a liability. It answer of B, merger of a two or more company. जेतल दीटा
दुईटा अति कम दुईटा कंपनी मिसी आउ गोटे कंपनी तैयारी करती आम कौन कहते अमालगमेशन कहते व्हिच मेथड ऑफ अमालगमेशन इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग टू बुक वैल्यू कंबाइनिंग बुक वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी देखो एसेट और लायबिलिटी बुक वैल्यू रे कोटा अमालगमेशन होता है पुलिंग मेथड रहता है ना परचेज मेथड ना कंसोलिडेशन ना मर्जर हमर आंसर हम पुलिंग इंटरेस्ट मेथड देखो पुलिंग इंटरेस्ट मेथड कौन हुए ना हमर एसेट लायबिलिटी को तार एक्चुअल बुक वैल्यू रे फेयर वैल्यू न बुक वैल्यू रे ताको शो कराई थाए आउ एठी हमर एठी हमर जो दी जनकर हमर कोन मर्ज होबो तांकर समान दी जन को समान 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 आवार देखिया पे हमर ए मेथड टा निया थाए नेक्स्ट देखो 3 नंबर इन द परचेज ऑफ मेथड परचेज मेथड कथा पचारला ऑफ अमालगमेशन व्हाट इज रिकॉग्नाइज अ गुडविल एटी गुडविल ला केमित रिकॉग्नाइज करे एक्सेस पेमेंट ऑफ ओवर ए फेयर वैल्यू बुक वैल्यू लायबिलिटी ऑफ एक्वायर्ड कंपनी accumulated depreciation एटी कोन करे जाय एक्सेस पेमेंट करा हिताय ता फेयर वैल्यू ऊपर देखो एटी आ गोटे कथा तुम देखिया पाइलो कलर ही जाउ सब जांक ओके आंसर कौन हम आंसर को एक्सेस पेमेंट ओवर फेयर वैल्यू हम कारण परचेज मेथड आम कौन करते जिते भी एसेट और लायबिलिटी अच्छे सब जाक आम फेयर वैल्यू रे कौन करते फेयर वैल्यू रे कैलकुलेशन करते आ जदि एक्सेस है सेटा को आम कौन हिसाब से नहीं गुडविल हिसाब से रिकॉग्नाइज करते नेक्स्ट देखो व्हाट इज द प्राइमरी अजम्पशन ऑफ पुलिंग इंटरेस्ट मेथड पुलिंग इंटरेस्ट में प्राइमरी अजम्पशन कौन पचारला कौन हम कॉमन कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस फेयर वैल्यू असेसमेंट इक्वालिटी इन एक्सचेंज कौन हम हमारा आंसर इक्वालिटी टू एक्सचेंज इक्वालिटी टू एक्सचेंज हमर हेता है ओके 5 नंबर देखिबा which financial statement is adjusted to reflect the merger entity as if it had always existed in the pooling and interest method कौन हम आंसर हम बैलेंस शीट ओके कौन हम आंसर हम बैलेंस शीट ये कौन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट टा कौन होता है एडजस्टेड हैला परे मर्जर हो रिफ्लेक्ट द मर्जर एंटिटी as it had always existed in the pooling interest method पुलिंग इंटरेस्ट मेथड कौन होता है ना जो दी जन मर्जर होता बैलेंस शीट रे शो करता है व्हाट इज स्टैट्यूटरी मर्जर स्टैट्यूटरी मर्जर मीनिंग कौन पचारला कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज विथ कॉमन कंट्रोल मर्जर अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी मर्जर वेयर बोथ कंपनीज सीज टू एग्जिस्ट मर्जर विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल देखो स्टैट्यूटरी मर्जर रे कौन होता है ना दीटा कंपनी सीज तो होती आउ एग्जिस्ट भी होती सहित एठे दीटा सिचुएशन अच्छी जदि तारिको एटा हमर आंसर हम सी हम देख स्टैट्यूटरी मर्जर रे दीटा कंपनी मर्ज होला परे सीज भी होती आ सहित दीटा एग्जिस्ट भी करते कारण अलग अलग ताकर जो फाइनल अकाउंट गुरा प्रिपरेशन होता है सहित एठी भी आउ गोटे कंडीशन हो पार जमीक गोटे कंपनी गोटे आउ गोटे कंपनी पूरा फुल सीज हो तार एग्जिस्ट किसी रहा एक्जिस्टेंस किसी रहा ओके दीटा कंडीशन ही पारे व्हिच टाइप ऑफ अमालगमेशन इन्वॉल्व्स सर्वाइवल ऑफ वन कंपनी लाइट सर्वाइवल ऑफ वन कंपनी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर कंपनी गोटे कंपनी फुली एब्जॉर्ब हो जाए गोटे सर्वाइव करूँ से मेथड आसो ये आसो आम कौन पुलिंग इंटरेस्ट कंसोलिडेशन स्टैट्यूटरी मर्जर पुलिंग इंटरेस्ट आंसर आसो स्टैट्यूटरी मर्जर हम ओके नेक्स्ट देखो what is the primary consideration in determining the exchange ratio of shares in a statutory merger primary consideration in determining the exchange ratio of shares in statutory merger कौन बुक वैल्यू शेयर्स फेयर वैल्यू ऑफ एसेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर रेगुलेटरी अप्रूवल कौन हो आंसर कौन हम आमर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट मर्जर बेले प्राइमरी कंसोल डिटरमाइन एक्सचेंज रेशियो ऑफ शेयर इन स्टैट्यूटरी मर्जर कौन आम कैलकुलेशन करा जाए फेयर वैल्यू ऊपर कैलकुलेशन कराई था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट ऊपर क्वेश्चन है जो कि हमारे सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट क्वेश्चन बाकी सब गला ये रहा सेकंड यूनिट क्वेश्चन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ये प्रॉमिस इज ए लीगल बाइंडिंग ये कॉजुअल एग्रीमेंट ये वर्बल स्टेटमेंट ये सोशल एग्रीमेंट कौन कॉन्ट्रैक्ट कौन हम कॉन्ट्रैक्ट हम
promise, a promise that is a legal binding. कौन हम a promise is a legal binding. ओके जो प्रॉमिस टा रहता है कॉन्ट्रैक्ट जने जो प्रॉमिस करता है सेटा कौन होता है लीगल बाइंडिंग होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करिया पई एसेंशियल एलिमेंट आ भितर कोटा से पचारला वर्बल कम्युनिकेशन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कैजुअल अंडरस्टैंडिंग सोशल ऑब्लिगेशन कौन हम आंसर हम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप देखो ये जो रहा भर्बाल कम्युनिकेशन भी हो पार कैजुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो पार किंतु ये सब जगह अल्प अल्प ठीक किंतु यहाँ फुल ठीक है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नेक्स्ट देखो इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ व्हाट इज कंसीडरेशन मीनिंग कौन पचाला एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी ए लीगल प्रॉमिस समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज फॉर प्रॉमिस ए स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट आमर आंसर हम सी हम समथिंग कौन हम समथिंग इन रिटर्न हम है कौन हम समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस्ड when can an offer be revoked in a contract when can गोटे ऑफर को आम केतले रिवोक कर दे परिया रिवोक माने भांगी दे परिया एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस आफ्टर एक्सेप्टेंस ओनली इन राइटिंग ओनली आफ्टर कंसीडरेशन कोटा हम आमर आंसर हम एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस आम जो ऑफरटा जने करिछि आउ जन को आर लोकटा से कौन कर रिसीव एतल ऑफरटा एक्सेप्टेंस करी नै से एक्सेप्टेंस जस्ट करवा पूर्व जब तुम भांगीदेव रिवोक करदेव ताले से कॉन्ट्रैक्टटा भांगी जाई परियो आउ कॉन्ट्रैक्ट हो पारिबो नाही किंतु सी थर एक्सेप्टेंस करदेला पर आउ रिवोक कले हो पारिबो सेटा डैमेजेस दबा पड़िबो ओके नेक्स्ट देखो जे भांगी से डैमेज देव what is the term for a contract in which both parties exchange promises to perform certain act what is the term for a contract in which both parties exchange promises to perform certain act कौन हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट void एग्रीमेंट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन हम देखो टर्म फॉर कॉन्ट्रैक्ट पचारा व्हिच बोथ पार्टी को कथा कहूँ है बोथ पार्टी कथा कहूँ तो एक्सचेंज कर प्रॉमिस एक्सचेंज कर टू परफॉर्म भी टू परफॉर्म सर्टन एक्ट कर ये बोथ पार्टी माने देखो यूनि माने सिंगल बायलेटरल माने डबल होची void एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अलग ओके तामाने आंसर हम बी हम बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बोथ पार्टी एक्सचेंज कर which type of contract arise when one party makes a promise to exchange for the other party's performance कौन हम यूनिलेटरल एग्जीक्यूटेड voidable and implied contract हमर जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अच्छे भर ये ऊपर भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which type of contract arise when one party makes promise one एटी ऊपर थिला देखो बोथ पार्टी थिला एटी रहला वन पार्टी कथा कहू ता माने कौन हम आंसर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हम हमर आंसर ओके नेक्स्ट देखो व्हाट इज द लीगल टर्म फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर one party is forced into an agreement under duress or coercion draws or coercion ने केतल under undue coercion ने केतल आस्ता है what is the legal term of contract where one party is forced into one party को करा जे फोर्स करिके ताको एग्रीमेंट अंडर को अना जाइछ ओके एटा कोन void कॉन्ट्रैक्ट हबो ना voidable हबो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हबो ना एग्जीक्यूटेड हबो हमर एटा आंसर हबो हमर एटा आंसर हबो कोन voidable कॉन्ट्रैक्ट हबो ओके ना ना अनएनफोर्सेबल कोडा हबो को हमर एटा आंसर हबो voidable कॉन्ट्रैक्ट हबो कारण वन साइड रे देखो पार्टीटा कौन हो तुम जबरदस्ती जन सहित कोर्सन कर अंडू इनफ्लुएंस कर आनी जबरदस्ती सहित कौन कर कॉन्ट्रैक्टा कर तेणुक तापर 8 नंबर रहा व्हाट इज द लीगल कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू पार्टीज टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट केते रहा एज एबव 18 ईयर एज एबव 21 ईयर एज एबव 16 ईयर एज एबव 25 तामाने आमर जो माइनर एज है अप टू 18 वर्ष पर्यंत 18 वर्ष ऊपर गले जड़े मेजोरिटी को आसी था तेणुक आमर आंसर हम ए ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन कहूँ आसर्शन रिजनिंग क्वेश्चन रहा
assertion reasoning question है देखो indemnity is a contract to compensate for loss reason कौन कहूँ indemnity is a type of a guarantee ये क्वेश्चन कोथरू आसी indemnity and guarantee chapter रू क्वेश्चन आसी ओके indemnity is a contract of compensate for loss और indemnity is a type of a guarantee एटी कौन कहूँ देखो both बोथ एटी बोथ आर ट्रू ऑफ इंडेमनिटी इन हम जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कंपेंसेट करते हैं लॉस को आउ इंडेमनिटी टाइप ऑफ इंडेमनिटी गारंटी तो चैप्टर ना हला कोन इंडेमनिटी गारंटी तादर जो गारंटर भी जने थिवो से जिम तार इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करि परिबो तेन करी ये हबो हमर आंसर ओके नेक्स्ट देखो असर्शन नहीं एटा मते भूल लागला कोन ना ना एटी कोन होची देखो सॉरी एटा हमर आंसर ए हबनी हमर आंसर ए हबनी इटी आंसर ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कंपेंसेट फॉर लॉस हां एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि किंतु रीजन इंडेमनिटी इज अ टाइप ऑफ गारंटी नहीं इंडेमनिटी इज अ टाइप ऑफ गारंटी इंडेमनिटी अलग गारंटी अलग तेनु करी हमर ए ठीक हबो बी भूल हे जो ओके ए ठीक हे जो बी भूल ओके मोर एटा ऊपरटा भूल थिला सेकंड क्वेश्चन देखो ये कॉन्ट्रैक्ट इज इंडेमनिटी इज प्राइमरीली ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्राइमरीली ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओके इटी देखो अलगा करी लिखला इटी डायरेक्ट लिखि देथिला इंडेमनिटी इज ए टाइप ऑफ गारंटी नाही इंडेमनिटी इज ए इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए प्राइमरीली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओके एटा ठीक हबो आ रीजन कोन होची बोथ इंडेमनिटी एंड गारंटी इन्वॉल्व्स प्रॉमिस टू कंपेंसेट लॉस आ दी जाको भी दी टांको सेक्टर रे दी टांको क्षेत्र रे कोन हेता प्रॉमिस करथांती कंपेंसेट को लॉस करिया पे तान करे ये भी तार करेक्ट एक्सप्लेनेशन होची ता सहित आंसर हबो बी ये हबो आंसर हमरा एटा ओके दुई नंबर कोन हबो आंसर ए हबो नेक्स्ट देखो 3 नंबर इन इंडेमनिटी असर्शन कहूची इन इंडेमनिटी द इंडेमनिफायर प्रॉमिसेस टू कंपेंसेट द इंडेमनिफाइड एग्नेस्ट लॉस कॉज्ड बाय द कंडक्टर बाय इंडेमनिफायर हिमसेल्फ जेतबले इंडेमनिटी रे इंडेमनिफायर कोन करथा है प्रॉमिस करथा है टू कंपेंसेट द इंडेमनिटी एग्नेस्ट लॉस इथ लॉस कथा पडितला लॉस जदी हुए से कोन करबो ताको कंपेंसेट करबो ओके ता माने ये असर्शन ता ठीक हे गेला ठीक अछि ता से तो रीजन कोन को देखिबा द एसेंस ऑफ इंडेमनिटी इज रीइंबर्समेंट फॉर एक्चुअल लॉस सफर्ड ओके ये भी ठीक है जदि लॉस किछ होउची से कोन करचंती ताको इमीडिएट से रीइंबर्समेंट करबो एक्चुअल लॉस जहाँ भी किछ सफर होची डैमेज कथा एटी फुल डैमेज रे कोन होता है ना गोटे पार्टली पेमेंट होता है एटी कहउची रीइंबर्समेंट हबो एक्चुअल लॉस जहाँ जेतिक तार लॉस हेची सब जांको से कोन करे पेमेंट करो ता माने एटी बोथ ठीक हे जो बोथ ठीक हो आर भी तार करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हबो ता माने ए हबो आंसर नेक्स्ट देखो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी A contract of guarantee involves three parties: the principal debtor, the surety, the creditor. ठीक अच्छे ये तीन जन था जन सिक्योरिटी थाए जन प्रिंसिपल डेप्टर थाए जन सिक्योरिटी थाए और जन क्रेडिटर थाए ओके तापर देखो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द सिक्योरिटी प्रॉमिसेस परफॉर्म द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर इन केस ऑफ डिफॉल्ट ये भी ठीक है माने ये भी ठीक वो भी ठीक माने ये रो प्रॉपर रीजन टा भी ये शो करूछ आर रीजन भी शो करू तेन करी आंसर हबो हमरो ये हबो आंसर ओके नेक्स्ट देखो 5 नंबर क्वेश्चन ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म टू प्रॉमिस डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट हां एटा हम ऊपर क्वेश्चन में पढ़ले सेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रे प्रॉमिस कोन करछि प्रॉमिस डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट के करछि सिक्योरिटी करछि in a contract of guarantee the surety liability is secondary to the principal of debt हां ये भी ठीक अछि surety रो liability रा secondary रहइबो आ debtor आ creditor रो दि जणर को रहइबो ताकर प्राइमरी रहइबो ओके जदी एटी debtor कोन करछि माने डिफॉल्ट होछि surety तार कोन करइबो प्रॉमिस टा फुलफिल करइबो तेन करी कोन हबो आंसर बोथ आर करेक्ट हबो आ एक्सप्लेनेशन हबो ए भी होछि ओके ये रहला रीजनिंग असर्शन किछ क्वेश्चन तापर देखो What is the maximum number of members for private company under Companies Act 2013? ये Companies Act ऊपर आइला क्वेश्चन केते जन दरकार 50 100 200 नो मैक्सिमम लिमिट कोन हो आंसर अब ए 50 जन दरकार What is the maximum number of members for a private company under the Companies Act कोन हो आंसर मैक्सिमम नंबर हला 50 50 हो ना 200 हो 50 हो हाँ
According to Companies Act 2013, what is the minimum number of a director required public company? Director কথা পଚାরছি, director কথা পচারছি মানে কোন হবো ଆମର ଆମର এটা আনসার হব आंसर हम 3 हम आंसर ओके 3 जन मिनिमम नंबर दरकार ओके हाँ तार कौन दरकार अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर ए पब्लिक कंपनी आंसर होची 3 ओके तापरे तापर व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट फॉर द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ subsidiaries layers of subsidiaries that a company can have under company act 2013 1 2 3 no limit कौन हम आंसर आंसर हम कौन देखिए 4 नंबर 3 नंबर देखिए 2 नंबर 3 3 नंबर 2 हम ओके 3 नंबर हम कौन 2 हम आंसर आंसर कौन हम 3 नंबर 2 हम व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट फॉर द नंबर ऑफ layers the statutory subsidiaries that a company can have under the Companies Act 2013 that is 2 okay which financial statement is required to prepare under section 129 of a Companies Act 2013 in addition to the balance sheet and a profit loss account cash flow statement of a change in equity statement of a comprehensive income statement of a cash flow कौन आसो आमर आंसर एटा होची कोन कैश फ्लो स्टेटमेंट आमर हबो आंसर ओके हमर को बैलेंस शीट आ प्रॉफिट लॉस सहित कोनटा हबा दरकार कैश फ्लो स्टेटमेंट हबा दरकार तेन करी 5 नंबर देखिबा इट व्हाट इज द मैक्सिमम टर्नर ऑफ ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर द कंपनीज एक्ट केते थर होई परिबो से होई परिबो 5 इयर्स पर्यंत होई परिबो केते वर्ष पर्यंत होई परिबो 5 इयर्स पर्यंत से होई परिबो in the context of a related party transaction what percentage of a voting power is considered as a substantial interest under Companies Act 10% 15% 20% 25% केते हो हमर आंसर हबो 20% पर्यंत हम कोन करि परिबा ताको एक्वायर करि परिबा in the context of related party transaction what percentage of voting power is considered a substantial interest under को इंटरेस्ट कथा कहला सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कथा कहला अंडर द कंपनी एक्ट 2013 होची केते 20% ओके बुझि पालो नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ए पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 बिफोर इट कैन कमेंस बिजनेस रुपीज 1 लाख 5 लाख 10 लाख एंड 15 लाख कोन हो आंसर हबो कोन 10 लाख हो ओके कौन हम आंसर हम 10 लाख व्हाट इज द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द पब्लिक कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट बिफोर कमर्स बिजनेस होच केते 10 लाख टका ता पाकर थिबा दरकार ओके नेक्स्ट देखिबा हु हैज द पावर टू order an investigation into affairs of a company under the Companies Act 2013 register of companies Security Exchange Board of India, National Company Law Tribunal, Ministry of Finance. कौन हम आंसर हम रजिस्टर ऑफ कंपनीज कौन हम आंसर हम रजिस्टर ऑफ कंपनीज आ कंपनी एक्ट अंडर रे हम कौन हबा दरकार रजिस्टर हबा दरकार ओके ए गोटे क्वेश्चन आज पे ए वीडियो रे एति थाउ नेक्स्ट वीडियो रे बाकी क्वेश्चन सब कवर करबा धन्यवाद।